हमने बात की आरएनए एक्सट्रैक्शन की और उसके स्टोरेज के हवाले से। आरएनए के हवाले से जब फर्दर रिसर्च में इसकी यूटिलाइजेशन करना होती है तो आरएनए के इंटैक्ट होने का जो चांस है वो हमें मेंटेन रखना चाहिए। दैट द आरएनए विच वी आइसोलेटेड कपल ऑफ वीक्स बिफोर, कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स बिफोर is still intact and is not degraded by the action of RNases. So RNA को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए या शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए अगर हमें संभाल के रखना है, स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मामाइड, डीआयोनाइज्ड फॉर्मामाइड यूज़ करते हुए आरएनए को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक्वस बफर में -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जा सकता है। और इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन इन एथनॉल इट कैन बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डीआयोनाइज्ड फॉर्मामाइड की बात करें, दिस फॉर्मामाइड प्रोवाइड्स अ स्टेबल एनवायरनमेंट टू आरएनए एंड इट प्रोटेक्ट्स द आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएजेस। Purified RNA is going to be dissolved in formaldehyde very quickly, and the maximum concentration can be 4 milligram per milliliter. At this concentration, we can dissolve the RNA in formaldehyde, and later on, this RNA can be used for different purposes. Like it can be used for gel electrophoresis, it can be used for RT-PCR, and RNases are not going to target this RNA in the presence of formaldehyde. It will not only save our time, but it will also ensure that our experimental results are reliable and not inconsistent. In some cases, formaldehyde can also play some role interference in the further utilization of RNA for further reactions. In that case, it is possible to remove the RNA or to recover the RNA from formaldehyde, and it can be done by simple ethanol, using ethanol precipitation with ethanol. 4 volumes of ethanol can be used, and then by diluting or the second method, by diluting the formaldehyde with sodium chloride solution and subsequent use of ethanol for precipitation of RNA. This can be done so that the formaldehyde can be separated and RNA can be recovered from the formaldehyde solution. दूसरा तरीक़ेकार जो है, that is use of aqueous buffers and storage at -80 degree centigrade. In this case, the buffers, they are supplemented or they contain SDS in TE buffer and or TE buffer or DEPC treated water and containing EDTA. So SDS, EDTA either in TE buffer or in DEPC treated water. This provides an aqueous buffer for storage of RNA. RNA can be stored at -80 degree centigrade. Later on, the SDS is removed by chloroform extraction, and ethanol precipitation is used for RNA purification before we want to proceed further for any enzymatic action, enzymatic treatment for RNA. जैसा कि enzymatic treatment में RNA को अगर आपने reverse transcribe करना है, you are going to use an enzyme to the reverse transcriptase to make the cDNA. So if you want to go for this step, you need to remove the SDS and you have to purify the RNA using ethanol. The third method to store the RNA is in the suspension form at -20 degree centigrade in ethanol. अब ethanol में जब हम RNA को suspended form में store करते हैं, it is possible that we can remove the RNA as per our requirement using specific pipettes. लेकिन इसमें एक limitation है, और वो limitation क्या है? जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से पहले हम डीएनए के हवाले से भी बात कर चुके हैं, आरएनए इज़ ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड। जब इसको हम किसी जगह से पाइपेट आउट करना चाहते हैं तो इसकी विस्कोसिटी को देखना पड़ता है। दिस इज स्टिकी मॉलिक्यूल एंड लंपी मॉलिक्यूल एंड इट गेट्स स्टिक्ड with the pipette tips. Ultimately,
what happens that the consistency is not maintained. We lose much of the RNA with the pipette tips, and we are not going to get maximum utilization of RNA if we store the RNA by this method.